A very good evening and welcome everyone. Poetry whispers to us through the noise of our times. When all else hurts, poetry redeems in its writing and in its reading. It helps us connect with the world we inhabit but have forgotten. It connects us to the joys and the pain of the millions we share this life with. Kritya, along with the World Poetry Movement, recognizes the value of poetic articulation amidst prosaic realities. On behalf of the festival director, Dr. Rati Saxena, I welcome you all to the fourth episode of the current session and season of poetry. We have with us three poets from the Himalayan state of Himachal Pradesh, two from the deserts of Rajasthan, and three poets from beyond the horizon. We have two from Bulgaria and one from Germany. I welcome all of you to this session of poetry, and I hope you all in the audience. So here we go. First and foremost, we have Anton Maeve. He's a Bulgarian writer, and he's the author of 24 published books, which include poetry, prose, scientific monographs. His works have been translated into English, German, French, Turkish, Italian, and many other languages. He is the winner of a number of national and international awards for literature. He lives in Bulgaria and has worked as a librarian, as a criticist, as a reporter, columnist, foreign politics observer, and publisher. He is the director of the International Poetry Festival, Orpheus, the biggest one in Bulgaria. We're so happy to have Anton with us today. Anton, over to you. Thank you. Thank you for the invitation and greetings from Bulgaria. It's Easter now in Bulgaria, so Christ is risen, and I hope for peace and health for all of you. So the first poem I will read now in Bulgarian language. It's written 4 years ago. It's one of my first poems, and you will hear it in my native language. It's called, in English, it's called The Rider and the Knight. Ездачът и нощта. Тези черни, зелени коне, тоя тъмен живот, който гази ни, да ги стигна поисках, поне да надникна веднъж зад оградата, с двете голи ръце се набрах, после метнах над гривите ласото и припаднах от радост и страх. Сред кълта на червеното пазбище беше сън, те припускат без спир невъзможни, безумни идили, или ти като цирк, моята алена смърт в тия гриви, мой живот, аз съм черен ездач, аз съм лудият, който обести, чуй как пада вечерният здрач и целуваме тихо по белега, ето спуска се кървав дъждът, коленете трептят, уморени, тоя тъмен живот, тая смърт, дето рие с копита зелени. Thank you, Kamayani. Now it's your turn. In English reads, The Rider and the Knight. And the black and the green, black and tan spankers, and the darkness of life, and the walk. I was eager for a touch. I was anxious, taking a glance at the back of the wall. As a beggar on a horseback, I scaled. Then the lasso I flung at the mains, and from gladness and fear I failed. And I fainted in bloody red plains. It's a dream. Black and green spankers were spurring. How incredible, mad, unrestrained. And it flew like a circus, my vermilion death on those mains. Oh, my life, I'm the black and green rider. I'm the lunatic who you did hang.
You can hear the pangs of the dying Mustang begging the kiss of the night on the stripes. But you see, now the blood of the rain is descending from heaven to hell, and the darkness of life and the pain of death are just hoofs pawing in gel. Thank you. And my second poem, it's one of my latest poems. It's called about the different kinds of fear. You will hear it in Bulgarian. За различните видове страх. Страх да не бъдеш оставен, страх от тъмното, страх да не бъдеш оставен в тъмното. Дъщеря ми години по-късно, когато си тук е светло, тате, страх от пчели. Дядо ми имаше кошер на двора, страх от обождане, страх от ухапване, страх от изгаряне, страх от болка изобщо и после страх да си гол, страх от змии, страх от голите охлюви, страх от кастрация, страх от отхвърляне, страх от провал, а след това страх от кръв, страх от осъкътяване, страх от убиване, страх да убиваш. We are in the army now. И още страх за детето, страх за мъртвия, страх за живите, страх от изоставяне, страх да изоставиш, страх да не бъдеш отхвърлен, страх да бъдеш отхвърлен, страх от отхвърляне и накрая страх да пристъпиш оттатък, страх от оставане в тъмното. Thank you. Кама, Яни. सॉरी, कमानी जी का थोड़ा नेट का दिक्कत हो गई है, तो इसलिए मैं अब वंदना जी को आमंत्रित करता हूँ। वंदना जी कृपया अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। धन्यवाद ब्रिजेश जी। कविता पाठ अर्थ इज आवर होम कविता पाठ कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं झारखंड से हूँ और हिंदी में अपनी कविता का पाठ करूंगी और मेरी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद सुंदर मनोज हेम्ब्रोम, जो संताली लैंग्वेज के स्टोरी टेलर हैं, उन्होंने किया है। मेरी पहली कविता जो है वो है हम जानते हैं। हम जानते हैं तुम्हारे पास आसमान को छुपा देने जितना हथियारों का जखीरा है। हम जानते हैं तुम्हारे पास धरती को ढक देने जितनी विशाल फौज है। हम जानते हैं तुम्हारे पास ग्रह के अनंत शून्य जितना लालच, अहंकार और अमानवीयता है। पर तुम नहीं जानते हमारे पास धड़कता, नाचता, गाता हुआ दिल है। पाताल से आसमान तक को भेदते साल के पेड़ हैं। पुरखा लड़ाकों की आत्माएं हैं। पूरा का पूरा दिन है, समूची की समूची रात है। सूरज है, चांद है और हैं सितारे, सभी ग्रह नक्षत्रों, सौर मंडलों और जानी अनजानी दुनिया के साथ। धन्यवाद। कामायनी जी। वंदना जी, आप प्लीज अगली कविता पढ़ें, मैं ट्रांसलेशन उसके बाद पढ़ती हूँ। ठीक है, थैंक यू। मेरी दूसरी कविता है पुरखों के लिए। उस बुढ़िया के पास चांद आकर बैठता है, पीठ, कंधे, जांघों और उसकी गोद में तारे बेफिक्र होकर लुढ़क जाते हैं। फिर भी वह कहानियां सुनाते कभी नहीं थकती। उसके किस्सों, गीतों के झरनों में चांद तारे डूबते उगते रहते हैं। नदियों की सभी लहरें उसके चेहरे पर झुर्रियों की तरह अटखेलियां करती हैं। उसकी सांसों में जंगल के सारे पेड़ झूमते रहते हैं। वह जब हंसती है,
पंछियों का झुंड धरती को बितराए पहाड़ पहाड़ खिलखिलाता है। काल से परे वह बुढ़िया दिमता चींटियों की तरह नमकीन है, केवंद सी मीठी और सुपारी की तरह कसैली। उसे कोई जादू नहीं आती, पर वह कभी मिट्टी की तरह गीली तो कभी चट्टानी पत्थरों की तरह सख्त, अतीत, वर्तमान और भविष्य को तंबाकू की तरह मसलते हुए कहीं भी अड़ी खड़ी मिल जाती है। कमाइनी। धन्यवाद। हेलो, मैं अगली कविता का पाठ करूं? जी। मेरी तीसरी कविता है जिस दिन थक जाएंगे। चांद और सितारे जिस दिन थक जाएंगे, जिस दिन सूरज अपनी ही गर्मी से बेबस हो जाएगा, बारिश जब अपनी ही बूंदों से बुरी तरह भीग जाएगी, नदी के रुकने का इंतजार करते हुए हम भी कहीं ठहर जाएंगे और थोड़ा सुस्ता लेंगे, पुरखा पत्थरों पर सिर टिकाते हुए टांगों को आसमान तक पसार कर। पिछली सदियों से समाज शास्त्री और मानव विज्ञानी, हमारे शुभचिंतक, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ और सामाजिक प्रबंधक कहते आ रहे हैं। हमारे शुभचिंतक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और सामाजिक प्रबंधक कहते आ रहे हैं, अगले कुछ दशकों में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे आदिवासी। ग्लोबल इकोनॉमी का बुलडोजर सपाट कर देगा धरती को और हत्यारे शिकारियों का दल चुन चुन कर मार देगा जंगल के हर जीव जंतु को। हम सोचते हैं समुद्र मंथन के बाद भी जीवित है मैना, एरावत हाथी की पीढ़ियां अभी भी घूमते झामते आ जाते हैं और ढूंढते हैं अपना हिस्सा, और जब नहीं मिलता उन्हें हड़िया महुआ, छोड़ जाते हैं अपना गुस्सा। अभी भी दिखाई देती हैं डुंडलू जैसी परी तितलियां और कतारबद्ध चींटियां, टाइल्स के बैरिकेड की परवाह किए बिना आ धमकती हैं आलीशान बंगलों में। सोचती हूँ जिस दिन पौधे उगने से मना कर दें, पहाड़ों में नहीं धड़केंगे दिल और झरने, कौवे कांव कांव नहीं पुकारेंगे, तोते अभिनय करना भूल जाएंगे, हमारे सबसे पुराने दोस्त कुत्ते हमारे हमसे हमेशा के लिए कुट्टी कर लेंगे, पहाड़ सदा सदा के लिए पताल की गोद में सो जाएंगे, हम भी जी भरकर विश्राम करेंगे। फिलहाल जो भी कर रहे हैं भविष्यवाणियां फिलहाल जो भी कर रहे हैं भविष्यवाणियां हमारे और इस ग्रह के खात्मे की, वे सब ना हमको समझते हैं और ना ही जानते हैं सृष्टि का आबूझ मनोविज्ञान। फिर भी जो उनकी झूठी भविष्यवाणियों में, उनके विकास के नक्शे में कई सदी पहले ही एक्सटिंक्ट और विलोपित हो चुके हैं, चांद तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं। क्योंकि सच सूरज है, क्योंकि सच सूरज है, क्योंकि महज कृत्रिम सत्ता के जोर पर कोई रंगहीन मनुष्य नहीं हो जाता, कोई रंगहीन मनुष्य नहीं हो जाता। अंतहीन अपार रंग बिरंगी सृष्टि का मालिक और इस ग्रह के जीव जंतुओं का भविष्यवक्ता। क्योंकि सच सूरज है, क्योंकि महज कृत्रिम सत्ता के जोर पर कोई रंगहीन मनुष्य नहीं हो जाता, अंतहीन अपार रंग बिरंगी सृष्टि का मालिक और इस ग्रह के जीव जंतु का भविष्यवक्ता। धन्यवाद। कामायनी जी। जी, बहुत खूब वंदना जी। मैं आपकी तीनों कविताओं का ट्रांसलेशन एक साथ पढ़ूंगी, इनका अनुवाद एक साथ पढ़ूंगी। सबसे पहली कविता थी हम जानते हैं, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश में इसका टाइटल है वी नो। We know you have a lump of weapons and ammunitions to block the sky. We know you have large armies to enwrap the entire earth. We know
You have tremendous greed, ego, and inhumanity, like the infinitive black hole of the universe. But you do not know. We have a heart that is beating and dancing. We have sal trees which pierce the sky from the bottom of the earth. We have spirits of our ancestral warriors. We have the whole day and the entire night. We have the sun. We have the moon and the stars. We live with all planets, constellations, solar system, and the world of known and unknown. This was translated by Sundar Manoj Hembrom. The next poem was Purkhon ke liye, and in English, the poem reads, For our ancestors. The moon sits down near our grandma, and the stars roll down carelessly over her back, shoulders, thighs, and lap. Though she never tires of telling her stories in the cascade of her stories and songs, the moon and stars dive and rise continually. Like the waves of the rivers, the wrinkles ripple on her face. All the trees of the forest sway with her breathing when she laughs. The flock of birds and the mountains spreading over the earth their cackle. Our grandma is ageless. She's slightly salty as the Demta ants. She is as sweet as Kund. She is as bitter as the betel nut. She doesn't cast a spell. Sometimes she's as soft as the wet soil. Sometimes she's as tough as the solid rock. She could be seen anywhere, standing outrightly, chaffing the past, present, and future like the tobacco. This again was translated by Sundar Mohan Hembrom. And the last poem was Jis Din Thak Jayenge. This poem in English is The Day They Get Tired. The day the moon and stars get tired. The day the moon and stars get tired, the sun will become powerless by its own heat. The rain will get drenched by its own droplets. We too will be stalled somewhere, waiting for the river to stop its flow. Then we can take some rest by spreading our head on our ancestors' tombstone, spreading our legs towards the sky. In the past centuries, the sociologists and the anthropologists, our well-wisher philosophers, politicians, and social managers used to preach to us that the Adivasis will be extinct in the next few decades. The bulldozer of global economy will flatten the earth, and the gang of the bloody hunters will spot and kill every creature of the jungle. We think that even after the churning of the ocean, Maina is still alive. The generations of Airavata the elephant are still coming, swinging their heads, seeking their share. And when they won't get Handia and Mahua, they still leave by imprinting their anger. Dundulu, the angel butterflies, and the queued up ants are seen even now. They do not care about the barricade of tiles and enter the posh bungalows. I do ponder. The day the plants refuse to grow, the streams of the mountains stop beating their hearts, the crows stop cawing, the parrots forget to imitate, the dogs, the oldest friends of ours, estrange us forever, the mountains will sleep in the lack of Sheol forever. We too will rest to our heart's content. Whoever is making predictions about extinction of this planet and all of us knows nothing about us. And they do not understand the incomprehensible philosophy of nature.
We have been extinct centuries ago in their false prophecy, in their blueprint of development. Nevertheless, we are still twinkling like the moon and the stars because the truth is like the sun. Because no pallid human being, by dint of mere artifice to rule, can be the master of this colorful, infinite nature, and they cannot be the prophet for all the creatures of this planet. They cannot be the prophet for all the creatures of this planet. This again was translated by Sundar Manoj Hebram. Thank you, Vandanaji, for those absolutely beautiful poems. I want to now go back to Anton's poems. I'm sorry I lost connectivity in the meantime, and I need to read his translations. So I read one poem in translation, the second poem, which was called About the Different Kinds of Fear. Fear not to be left, fear of darkness, fear not to be left in the darkness. My daughter told me years later, it's light when you're here, Dad. Fear of bees. My grandma had a beehive in the yard. Fear of pricking, fear of biting, fear of burning, fear of pain whatsoever. And then, fear of being naked, fear of snakes, fear of snails, fear of castration, fear of rejection, fear of failure, and then fear of blood, fear of maiming, fear to be killed, fear to kill. We're in the army now. And more, fear for the child, fear for the dead, fear for the living, fear to be left, fear to leave, fear not to be rejected, fear to be rejected, fear of rejecting, and finally, fear to step beyond, fear of staying in the darkness. The third poem was called Crossing Thresholds. To cross the home threshold, the garden threshold, the school threshold, the army threshold, the university ones have their degrees. To cross the woman's thresholds, the hospital threshold, which is also maternal. To cross also the threshold of your first job and the next one and the one following it. To cross the threshold of tiredness, the boredom of crossing itself, to cross the boredom and loneliness, to cross the threshold of the child again, who is now taller than you, to cross the threshold of life, the threshold of death, just to cross. Thank you, Anton. I'm sorry these translations didn't come along with the poems, but I think they're lovely. Thank you so much. Next, we are going to hear Neeraj Dayaji. Neeraj Dayaji is a Rajasthani poet. He teaches in Rajasthan and he is vastly published. He's a critic, he's a satirist, he's a poet and an essayist. And I think there are more than 24 books to his credit. He's going to speak in Rajasthani and he will also read out his own poems translated into Hindi. Neeraj ji, welcome. धन्यवाद। पहली कविता मैं राजस्थानी में पढ़ूंगा, उसके बाद राजस्थानी कविताओं के हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले धन्यवाद इस मंच का कि मुझे यह अवसर प्रदान किया। रति सक्सेना जी और आप सभी मित्रों को अभिवादन। कविता का शीर्षक है रगत रलियोड़ी भाषा, यानी रक्त में घुली हुई भाषा। राजस्थानी में आप इसे सुनिए। राजस्थानी भाषा मारे रगत रलियोड़ी है, राजस्थानी भाषा मारे रगत रलियोड़ी है। आ उड़ी जे आपने कवितारी ओड़ी नहीं लागे तो कोई बात कोने। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषारी संभाल, भाषारी हेमाणी लिया उभो हूं मैं। आपरे मुंढे फूल जड़िया मरगी राजस्थानी भाषा, बाल दी राज उड़ने बरसा पहली कोनी राजरी मानता। कोई बात कोनी जद मरगी म्हारी भाषा, फूल चुगड़ने दूजो कुण आसी। ओ पक्को है कि आप आपरी जीवती भाषा सु, बिता कोनी जुड़िया जिता मैं म्हारी भाषा सु। जे आ बात नी होती साच,
तोईसी अबखी घड़ी फूल झाड़न सु बचता आप आ ओળી जे आपने कवितारी ओળી नहीं लागे तो कोई बात कोनी आ ओળી जे आपने कवितारी ओળી नहीं लागे तो कोई बात कोनी। राजस्थानी भाषा राजस्थानी अरे रगत लड़ियोड़ी भाषा है। ये जो कविता अगली है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर मदन गोपाल लड्ढा ने किया है। जहां कहीं मन लगे कविता का शीर्षक है। जिस घर में मन लगे, जहां कहीं मन लगे, जिस घर में मन लगे, जहां कहीं मन लगे, जीवो मन लगाकर सुख से। जिस घर में मन लगे, जहां कहीं मन लगे, जीवो मन लगाकर सुख से। जीने का मतलब है सुख से रहना, सुख से दुख भोगना, जीना केवल सुख से। जीने का मतलब सुख से रहना, सुख से दुख भोगना, जीना केवल सुख से। घर जीने के लिए होता है। बेमन जीना अपने घर में मरना होता है। बेमन जीना अपने घर में मरना होता है। यदि मरना ही है तो घर शमशान क्यों बने? यदि मरना ही है तो घर शमशान क्यों बने? बदल लीजिए जीने के लिए घर। जियो मन लगाकर। जिस घर में मन लगे, जहां कहीं मन लगे, जिस घर में मन लगे, जहां कहीं मन लगे। अगली कविता का शीर्षक है जानना चाहता हूं मैं। सूरज चांद की लुढ़कती गेंदों से नहीं रीझूंगा मैं। सूरज चांद की गुड़कती गेंदों से नहीं रीझूंगा मैं। जानना चाहता हूं मैं कि शेष नाग के फन पर है या किसी बैल के सींगों पर यह धरती। जानना चाहता हूं मैं कि शेष नाग के फन पर है या किसी बैल के सींगों पर यह धरती। जानना चाहता हूं मैं कि मेरी जड़ें जमीन में हैं। जानना चाहता हूं मैं कि मेरी जड़ें जमीन में है या आकाश में किसी डोर से बंधा हुआ हूं मैं, या आकाश में किसी डोर से बंधा हुआ हूं मैं। जानना चाहता हूं मैं कि किसी बियावान में भटकूंगा या पंख लगा उड़ूंगा आकाश में किसी दूसरे की आंख से। जानना चाहता हूं मैं कि किसी पुटिये काका के पैरों पर है या किसी कृष्ण की अंगुली पर यह आकाश। जानना चाहता हूं मैं कि किसी पुटिये काके के पैरों पर है या किसी कृष्ण की अंगुली पर यह आकाश। वर्षा बदली या इंद्रधनुष से नहीं रीझूंगा मैं। वर्षा बदली या इंद्रधनुष से नहीं रीझूंगा मैं। जानना चाहता हूं मैं। अंतिम कविता है, शीर्षक घर बाबत, यानी घर के बारे में। ठिकाना तो वही है, ठिकाना तो वही है, घर वह घर नहीं जो था कभी जीसा। ठिकाना तो वही है, घर वह घर नहीं जो था कभी जीसा। नाम तो वही है, नाम तो वही है, भाई वह भाई नहीं जो था कभी जीसा। घर जिसमें थे आप जीसा, घर जिसमें थे आप जीसा, भाई जिसमें मैं था जीसा। पता नहीं चला कब क्या हो गया, पता नहीं चला कब क्या हो गया। जूने घर को दबाकर खड़ा हो गया नया घर, जूने घर को दबाकर खड़ा हो गया नया घर। जिसा आपने बनाया था जो वह घर अब नहीं है। जिसा आपने बनाया था जो वह घर अब नहीं है। भाई कहता है घर है, भाई कहता है घर है। ऐसे घर के बारे में मैं क्या कहूं जीसा, ऐसे घर के बारे में मैं क्या कहूं जीसा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया नीरज जी, थैंक यू। बहुत सुंदर कविताएं थी। अगली दफे जब आप आए तो इनकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करके सबको इसका फ्लेवर देंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अशोक कुमार गौतम, ये चंबा जिला हिमाचल प्रदेश से मूलतः हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। ही इज अगेन अ वेरी
prolific writer, and he has been published in almost all the important magazines and literary journals of the country. We are very happy to have with us Ashok Kumar. And over to you, Ashok Kumarji. You shall read your poems in Hindi and I shall read them in translation. You'll have to unmute yourself. Ashok ji, आप muted हैं. Sorry. Thank you very much. कृत्य मंच का बहुत बहुत शुक्रिया. आज कविता पढ़नी थी और मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए. देन आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट पॉइंट, जिसका शीर्षक है खूबसूरत औरतें. वे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतें थी, जो पहाड़ सी जिंदगी को लांघती फलांगती हुई किसी भी आंगन में देर तक बतियाती, जोर जोर से ठठियाती और उदासियों को दूर धकेल देती. उन्होंने छुपकर प्रेम किया और पनिहारों घासनियों में गुनगुनाते हुए विरह के सबसे मीठे गीत गाए. वे जब दुखी हुई तो खेतों में उगे झाड़ झंकाड़ों को दरातियों से काट छाट आई. उनके हिस्से में सबसे आखिरी रोटी, सबके बाद में कपड़ा और सबसे कम खुशियां आई. उन्होंने गहने बेचकर बेटों को शहर भेजा और जंगल के सबसे खूबसूरत फूल चुनकर अपने जूड़ों में खोस लिए. उन्होंने बेटी की विदाई पर बचाए गए आंसुओं को बेटों के परदेश जाने पर बहाया. उन्होंने नहीं खर्चे बेटे के दिए हुए पैसे, उन्हें छुपाकर रखा कपड़ों की तहों के बीच और पीहर आई बेटी के हाथों पर रख दिया. मेरे सपनों में आती हैं वो सारी औरतें जो मेरी माएँ तो नहीं है, किंतु एक वक्त के बाद मेरी माँ का चेहरा उन सबसे मिलने लग गया है. मैं दूसरी कविता पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है डरा हुआ व्यक्ति. कि मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूँ, मैं भीड़ में शामिल वो हत्यारा हूँ जिसने पत्थर तो नहीं उठाया लेकिन खामोश खड़ा रहा. मैं पंक्ति में खड़ा वो नास्तिक हूँ जो आडंबरों में शामिल है रिवाजों के नाम पर. मैं फसाद के विरुद्ध वो सेक्युलर हूँ जो सौहार्द के पक्ष में खड़ा है जातीय दम के साथ. दरअसल मैं भीतर से डरा हुआ वह व्यक्ति हूँ जो विद्रोह किए बगैर क्रांति चाहता है. मैं तीसरी कविता पढ़ रहा हूँ, लेटर बॉक्स, जिसका शीर्षक है कि चौराहे पर खड़ा लेटर बॉक्स अब खाली पड़ा है, भीतर से बिल्कुल वीरान, उसमें कोई चिट्ठी नहीं. वहां से गुजरते हुए बेटा अक्सर पूछ लेता है कि पापा ये क्या है, कोई लैंडमार्क है क्या? मैं उसे समझाता हूँ कि ये लेटर बॉक्स है, इसमें चिट्ठियां डाली जाती हैं. वो बड़े ध्यान से सुनता है, विस्मय से देखता है और मैं फोन पर उंगलियां दौड़ाता हुआ धीमे से मुस्कुरा देता हूँ. मैं सोचता हूँ कि अगर लेटर बॉक्स बोल सकते तो जरूर बोलते कि खत लिखे जाने चाहिए, कि आज भी बहुत लोग किसी खत के इंतजार में हैं. और अगली कविता पढ़ रहा हूं मैं, पहाड़ों की याद में. मैं मैदानों के बीचों बीच खड़ा हुआ अचंभित हो रहा हूँ, ये कैसा फैलाव है. मेरी आंखों से लेकर दूर क्षितिज तक कोई अवरोध नहीं. मैं मैदान होने से डरने लगा हूँ, मैं डरने लगा हूँ इस विस्तार से. मैं बिना किसी अवरोध के इस विस्तृत फैलाव से डर रहा हूँ. और मैं अब सोच रहा हूँ कि बड़े से बड़े मैदान में भी छोटे छोटे पहाड़ उगाने चाहिए, कि जिसकी चोटियों पर कोई खूबसूरत झील हो, कि जहाँ घाटियों से होकर कोई नदी बहती रहे, कि अगर पार जाना पड़े तो भी पुल बनाना पड़े. शायद मैं पहाड़ों की याद में हूँ या उस झील की याद में,
या उन नदियों की याद में या फिर उस पुल की याद में हूँ कि जिसे पार करके मैं चाहता हूँ कि मैं लौटूं एक दिन और तुम मुझे उस झील के किनारे मेरा इंतजार करते हुए मिलो। मेरी आखिरी कविता है आठवां रंग कि अभी अभी उड़ी है एक तितली जो उस इंद्रधनुष में आठवां रंग भरना चाहती है। उसकी इस मासूम चाहना में शामिल हो गया है सूरज। बादलों ने और भी बारीक कर दिए हैं पानी के वो नन्हे प्रिज्म। हवाओं ने हौले से पंख सहलाकर उसको नई उड़ान दे दी है और बच्चे तालियां बजाकर बढ़ा रहे हैं उसका हौसला। तूफान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है, नदियां शांत हो गई हैं। इस दृश्य में शामिल हो गए हैं पहाड़ और झरनों के कोरस में जुड़ गया है कोई आठवां स्वर। और मैं पहाड़ों की चोटी पर खड़ा जोर जोर से चिल्लाकर ये कहना चाहता हूँ कि हे दुनिया के समझदार लोगों, कुछ क्षण शांत रहो। अभी ये तितली और ये नन्हे बच्चे हमारी इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में व्यस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशोक जी। आपने पांचों कविताएं पढ़ी और उनकी ट्रांसलेशन अब मैं पढ़ती हूँ। ट्रांसलेशन अशोक जी ने स्वयं की है। पहली कविता खूबसूरत औरतें, उसकी इंग्लिश में उसका टाइटल है ब्यूटिफुल विमेन। Those were the most beautiful women in the world who lived their lives leaping, soaring like a mountain. They talked long in the courtyards, chuckled aloud, and pushed the sadness away. They loved secretly and sang the sweetest songs of separation by the rivers and in the grasslands. They gathered all their difficulties like the grass, sat on it, and rested. When they were sad, they went to their fields and cut the bushes down with their sharp sickles. They always ate last. They were last to get clothes and had the least happiness in their lives. They sold jewelry to send their sons to the cities and chose the most beautiful flowers of the forest to make ornaments of. They saved their tears on the marriage of their daughters and shed them when their sons went abroad. They did not spend the money given by their sons. They hid it between the folds of their clothes and put it in the hands of the daughter who came to them after long. All those women come to me in my dreams. They are not my mothers. But after a while, my mother's face starts resembling theirs. The next poem, which in Hindi was Dara Hua Vyakti. In English, this poem is called Scared Person. I am the man in the crowd who didn't pick up the stone but chose to remain silent. I am the atheist who joined the pageantry in the name of customs. I'm the secular against unrest, the one who favors harmony with communal pride. Actually, I'm that scared person who wants change without a revolution. His next poem was Letterbox, and in English, again, it's called Letterbox. The letterbox on the crossroad stands empty, completely deserted. There's no letter inside. Passing by, my son often asks, "What is this, Papa? A landmark?" I explain to him that it is the box to put letters in. He listens attentively, amazed. I run my fingers on the phone pad and smile softly. I think if letter boxes could speak, they would say letters should be written, for there are many who wait for a letter even today. His next poem was Pahadon ki Yaad Mein.
And in English, this poem is called In Memory of the Mountains. I stand in the middle of the vast plains, amazed at how it spreads from my eyes to the distant horizon without obstruction. I'm scared to be the plains. I'm scared of this wide expanse. I'm scared of spreading without any hindrance. I now think that even in the middle of the vastest plains, little mountains should grow that dare to stand tall in the way of the sun, on whose peaks there is a beautiful lake where flows a river through the valley, so that if one wants to go across, a bridge needs to be built. Maybe I'm lost in the memory of mountains, or of that lake, or of those rivers, or of that bridge, having crossed which I wish to return one day, and I want to meet you by that lake, waiting for me. His last poem was Atwa Rang, and in English, this is called The Eighth Color. A butterfly has just flown, and it wants to fill the eighth color in the rainbow. The sun has joined this innocent desire of hers. The clouds have made those little prisms of water even finer. The wind has caressed her feathers. It has given her a new flight, and children clap their little hands, prodding her spirits. The storm is smiling away. The rivers have calmed down. Mountains have joined in, and to the chorus of springs, an eighth note has been added. And me, standing atop the mountain, shouting out aloud, want to say, shush, wise people of the world, be quiet for a while. For now, this butterfly and these little kids are busy making this world beautiful. Shush. Thank you so much, Ashokji. That was a beautiful feast of poetry from, I think the mountains haven't left you, even when you're in Delhi. Next, we have poetry from Augusta. Augusta hasn't been feeling well. So Kale Lar, her husband, has been kind enough to be with us today, and he will read these poems. Kale, welcome. You'll have to unmute yourself, Kale. Yeah. All right. Well, hello, everybody, and thank you for the invitation also on behalf of my wife. And thanks to all the poets that I've been able to listen to. I hope my wife could listen to them too. And for everything that is going to come. As you've heard, I'm not Augusta, but my name is Kale Aldislar. And the both of us, we are conducting the one and only Women's Poetry Festival in the world, which will have its 10th anniversary in this year, later in this year in November. And we know Rati Saxena for quite a while, as we have been invited in 2014 to the Kritya-Poetry Festival to India. And we could return the invitation in 2016 when we could invite Rati Saxena and Savitri Rajivan for an extended stay at our festival. And their slot, we call the slots at our festival, the focuses on special countries and regions, was presented then by Seth Michelson, and we have the fondest memories for that. And Rati gave us the pleasure also to have an introductory speech to our festival. So thanks again, although it's been a while, but maybe we can repeat that sometime. I'm reading a poem, a very recent, very new poem by my wife. It's called, appropriately so, I think, There is War in Europe. Listening to records on the sofa, bang, bang, shh,
And there's war, eat cookies. Noise, scratch, rumpelty-pump. And there is war, be angry. Bang, bang, shh, shh, and there is war, buy axes. Woof, woof, screaming through doors crashing. And there is war, go to the bank. Withdraw money, there is war. Be impatient, be sad, it's war. Noise, scratch, rumpelty-pump. The war pictures, the headlines, and it's war. Donate something. For real, it's war. Say something. Noise, scratch, rumpelty-pump. There is war. Turn off the heating. There is war. Go to the cinema. Write poems. For real, it's war. Noise, scratch, rumpelty-pump. Buy supplies. Store pills. And there is war, and it's war. Noise, scratch, rumpelty-pump. Thinking of you, but it's war. Sleep badly, and there is war. Noise, scratch, rumpelty-pump. Pretend for real, it's war. And be better than if. But it's war. Feeling helpless, awake, afraid. Hear the storm, there is war. How to talk about war like children playing ghostly games? Noise, scratch, rumpelty-pump. Gunmen, soldiers, killer ghosts. Thousands of dead in Mariupol. Noise, scratch, rumpelty-pump. Quivering flames on the river. Millions of refugees on the move. There is war. Alas, we poor sleepers, shaken and trembling. It's war. There is war in Europe. As I mentioned earlier, we are presenting a biennial festival of women poets. And back in 2018, we had already a focus on not only the Ukraine, but also on Georgia. Back then, the poets were already saying a lot about the ongoing situation, and some of their poets that they were reading back then could be read like today for what, if I may say so, is not a complex situation, but a very gruesome and a very cruel one. So please give me the opportunity to read one of the poems by Irina Tsilik, a Ukrainian poet who is at the moment, I hope, or we hope, that she's still alive in Lviv. She sent us this poet while she was with her child in the outskirts of Kiev, while her husband, also a renowned filmmaker and writer, is at arms defending his country. So this is a poem from 2018 that she read at our festival. Irina Tsilik. You say, I am tired of feeling guilty. You have a war going on, but I live in Switzerland. Don't you understand? A Christmas market somewhere in the center of Europe. We peel roasted chestnuts, blow on our fingers. The tender season of Advent. Someone is singing hallelujah in a thin voice. Someone is cutting mistletoe into portioned branches, and others are snacking on sausages. But really, you turn completely red down to the hair roots, as if the evening sun flooded the twilight forest with its rusty warmth. My sweet coeval, whom I barely know, just like me, so completely different. For several days during a poetry festival, we spin conversations on lofty matters, untangle balls of words, seek an exit from the labyrinth of our questions, and an exit that doesn't exist. You know, here we are guilty of everything, guilty towards all. You continue, now truly feeling exhausted. When entering a home, don't forget to take off your hat, wash your hands, apologize for the colonial past or for someone else's war. Sorry. You say sorry, and I too say sorry. An elephant in a china shop. A martinet at a Brazilian carnival. I'm also tired of feeling guilty. But the sun is shining, and we walk through a crowd, and mulled wine dangerously jumps in our cups, splashing its redness and stickiness. We do not know that a few days later, new bombings in Aleppo and terrorists in Istanbul and in Berlin at a Christmas market. We claim dozens of lives,
You will say, "Oh my God," and I will say, "Oh my God," reading the news on the monitor. The front line is always closer than it seems. But no, you and I are not guilty of it. Don't you understand? This was translated from the Ukrainian language by Vitaly Chernetsky. And finally, I would like to read a poem by Katerina Kalitko, who also was at our festival. By the way, all three poets that were invited from the Ukraine, we are trying to contact them constantly, and they are re-invited to our festival for this November. Of course, nobody knows whether or not this is, it will be possible for them. Nevertheless, we will have a focus on Ukraine and some surrounding countries as well on our festival. So this is by Katerina Kalitko, Ukrainian poet. She published it on Facebook on March 17th of this year. Here's your apricot blossom, hell. Here's your sting, death. Here is the blade of the blade that peels off our skin. Here are charred spots on the ground. It's just people lying. They died terribly. They rolled their stone of faith. Then rise up, O God, and call an army into battle. Raise gravestones over cemetery crops. Let these people stand up and have time to love someone. What did they do? What have you all done with them? Behold, the archangels lowering their flaming swords. How uncomfortable the blood splashes on the altar of the festive sky. As black silence rises in the mouth of the corpse, as it snows suddenly, April. There are beasts fused behind an iron wall. Doomsday, like a spring dress, measured and cut out, seams remain. And the choir sings that it is too late, and the dead rise behind them, and they ask for weapons. Thank you very much. Oh my God. Thank you so much, Kale. I think all three poems were an extraordinary experience. I have goosebumps. Oh, and I must put in a word for your magnanimity, for the fact that Augusta sent in her poem and you included two poems from other Ukrainian poets. So you've shared your screen time with them. You've taken us to Ukraine. I think geographically we're far away from Ukraine, so we don't see danger right on our doorstep physically. But the fact that there are poets who can connect us to the emotion that is crowding Ukraine right now, I think it's absolutely fabulous. Thank you. I think it's only forums like these that can universalize tragedy and universalize trauma. Thank you so much. Thanks for having After us. this amazing reading, I invite Indu Bharatwaj. Indu Bharatwaj is a poet from the pristine Kullu Valley of Himachal Pradesh. She writes poetry, she writes songs, and she writes plays. She's actively engaged in literary activities through various forums, and she's a teacher by profession. Indu, over to you. थैंक यू मैम। इस मंच से जुड़े आप सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ और अपनी कविताओं पर आती हूँ। सबसे पहले मेरी पहली कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता है मैं स्वयं को छोड़ आई हूँ वहां जहां धान के खेतों में साथ मिलकर देव उत्सव रोपे जाते थे, जहां बादलों के टुकड़े काट कर पहाड़ बुनता था हरियाली, जहां मेहनत के ताल से सुर मिलाती स्वर लहरियां सबसे ऊंचे शिखर पर बांध आती थी धरती और आकाश को, धूप के टुकड़े जोड़कर जिंदगी बना लेती थी अपने हिस्से का सूरज, खाली झोले झाड़ कर भी
ठंडी छांव निकल आती थी और सपनों के चक्कर काटते पैरों के लिए अक्सर छोटी पड़ जाती थी जमीन। ओस में भीगे मखमली घास के दलीचे चिपके रह गए हैं मेरे पैरों की दरारों में और मेरे पक्के घर के फर्श का मुंह चिढ़ाती है वही हरियाली। मैं चांद से हटाती हूँ जब विस्मृतियों के जाले, तो जमीन पर पड़ी बर्फ पर चमकने लगती हैं यादों के असंख्य दर्पण। मैं आज भी वहीं से कुछ रंग उधार ले आती हूँ मैं आज भी वहीं से कुछ रंग उधार ले आती हूँ। मेरे अनगिनत दिन रात भित्ति चित्रों जैसे टंगे हैं जहां अतीत की वीथिकाओं पर। सदियों से वादियों में तैरती अस्पष्ट सी ध्वनियां हौले से गुजरती हैं मेरे कानों को छूकर और मांगती हैं मुझसे किसी नई लिपि का पता, किसी नई लिपि का पता। So I have tried to write the translations of my poems. So here the first translation is in front of you. I've left myself where the festivals were sown in the paddy fields, where the mountains used to spin the pieces of clouds to weave greenery, where the melodious musical notes sung by the people working in the farms tied the earth and sky to the highest peak of the mountains, where by collecting the pieces of sunshine, soothing shade came out even from the empty bags, and land often fell short for the dreaming feet of childhood. Even today, velvet grass rugs soaked in dewdrops are stuck to the cracks of my feet, and the same greenery mocks on the marble floor of my concrete building. Every day, when I remove the webs of oblivion from the moon, the countless mirrors of memories start to shine on the snow-covered land. I often borrow some colors from the valleys where my numerous days and nights hang like graffiti on the gallery of past. The vague sounds floating in the plains for centuries, gently passing by, touch my ears and ask me daily an address of a new script. मेरी दूसरी कविता है स्त्रियां। स्त्रियां जब तूफानों की ओर मुंह करके उठ खड़ी होती हैं या शब्दों को धार देकर प्रपंचों और आडंबरों के खिलाफ बोल पड़ती हैं, तो वे बागी घोषित कर दी जाती हैं। दीवारें उनकी पीठ पीछे बातें करती हैं, दरारें उनके एकांत में झांकने के लिए उतावली रहती हैं। उनके कानों में पिघला लोहा उड़ेला जाता है और माथे पर काले अभिलेख चस्पा किए जाते हैं। उन्हें चुकानी पड़ती है रात को दिन ना कहने की कीमत। अपने इर्द गिर्द देवी वाले फ्रेम को तोड़कर वे लकीर के जाकर जब पूछती हैं प्रश्न, तो अचानक चरमराने लगती है सदियों से चलती कई व्यवस्थाएं। अंधेरे को ठेलकर अपने लिए उजाला समेटने की कोशिश करते उनके हाथों की लकीरों पर अक्सर गोद दिए जाते हैं असह्य अपशब्द, क्योंकि पीड़ित मौन का अचानक मुखर हो जाना शोषण के साम्राज्य का अंतिम अध्याय है, या फिर अपने अधिकार के लिए पहाड़ बनकर आवाज उठाती धरती आकाश की स्थापित सत्ता को खुली चुनौती है। The translation here is: women, when stand firmly facing the storm of this or speak against the discrepancies, they are declared rebels. Walls backbite about them. Cracks are eager to peep into their solitude. Molten iron is poured out in their ears. Black inscriptions are carved on their foreheads. They always have to
pay for not calling a night a day. When they break the goddess frame around them and cross the line of set norms and dare to ask questions, suddenly the arrangements going on for centuries start shaking. When they try to push back the dark and to collect some light for themselves in the lines of their hands, they are often gifted with unbearable abuses because sudden outspokenness of a silent victim is the last chapter for the empire of exploitation, or in the form of the mountain, the voice raising earth is an open challenge to the established power of the sky. My third poem is हवाओं में सौंधी सी महक लिए दिन और रात व्यस्त हैं गेहूं की कटाई में पहाड़ के कांधे पर सिर टिकाए सुस्ता रहा थका सूरज पुरवाई की मीठी लोरी सुनते हुए डूब जाएगा जब धीरे धीरे नींद के आगोश में तब शाम ढले वादी के गले में बाहें डाले चांद मनुहार करेगा बुरांस उत्सव में चलने की इस बार देवरथ फिर तैयार है तमाम वैभव और चमक दमक लिए लाव लश्कर समेत बीट के मेले में जाने के लिए गांव बड़ी मशक्कत से उच्च स्वर में लोक गीत गाते जंगल से खोजकर ले आया है बनक्शे और गुच्छियों की शक्ल में जोगणियों और बंशीरा देवता का यहाँ वहाँ उगा आशीर्वाद और इसी आशीर्वाद की मात्रा पर टिकी हैं कुछ नन्ही उम्मीदें एक जोड़ी नए कपड़ों की आस मेले में आए मेहमानों की खास भगत या जुबां पर घुलती जलेबी की मिठास मेले में साफ मौसम की गुहार लगा चुके मायूस हारियान देवता से क्षुब्ध हैं क्योंकि उन्हें तेज बारिश में देव परंपरा के ढोल नगाड़ों की आरोहित अवरोहित धुनों पर अनमने होकर भी नाचना जारी रखना पड़ा है और खराब हो गए हैं नए कलगी चोले टोपे और भीग रहा है स्वयं देवता मगर भीगे लिबास में भी अद्भुत गति और लय में नाचते देवरथ के स्वर्णिम मोहरों से फूट रहा है प्रसन्नता का अद्वितीय तेज खुश है शहनाई करनाल नरसिंगे और नाच रही है वादी नाटी की ताल पर देवता के सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश की दुआ मांगते 3 जोड़ी नन्हे हाथ देवता के थड़े पर चुपके से रखाए थे मालती के कुछ फूल गेहूं की नई बालियां और पड़ोसी से मिले गुड़ से मन मार कर बचाया गया एक छोटा सा टुकड़ा ताकि भीग जाए मेले की दुकान में टंगा छोटा मगर सुंदर सा टेडी बियर जिसे थोड़ा खराब कहकर खरीदा जा सके 20 रुपए कम देकर So the translation here is carrying fragrance of soil in the air, day and night are busy in harvesting wheat. The sluggish and tired sun, resting his head on the shoulder of the mountain, will slowly fall asleep while listening to the sweet lullaby of the eastern breeze. Then, in the evening, the moon with his arms around the neck of valley will plead to go to Buran's festival. This time, the palanquin of the deity is ready again with all the splendor, magnificence, priests and followers to attend the fair of Bit. The forest is singing the folklores at the high pitch, and with great efforts, the village has searched and brought home the blessings of the forest deities grown here and there in form of moral mushrooms. And on this very amount of blessings depends the hope for some new clothes, the special hospitality of the guests, or the quantity of the sweet taste of jalebi. The followers and priests
who had already pleaded for a clear weather in the fair, are angry with the deity. Because even in the heavy rain, they'll have to continue dancing on the ascending and descending tunes of religious drums. Their new crests, cloaks, and hats, and even the deity himself is getting wet. But even in the wet clothes, the palanquin is dancing in an amazing tempo and rhythm, and an unparalleled shine of happiness is visible on the faces of the deity. Shehnai, Karnal, and Narsinga are blissful, and the valley is dancing on the beat of the Nati dance. Except the deity, no one knows that while asking for heavy rain, 3 pairs of little praying hands had secretly offered some flowers of jasmine, grains of new wheat, and little piece of jaggery at the threshold of the temple, so that the small but beautiful teddy bear hanging at the corner stall in the fair may get wet and could be purchased on the discount of 20 rupees. Thank you. Thank you, Indu. I think your last poem was so Kullu Valley that one needs to belong to Kullu to understand that poem. Devta was so real, and the karnal and the nagara and the drenched clothes and the carriers, they were typical of the valley, that we will now need to invite all our international poets to come and attend the Kullu Dashera to understand this poem. So you're all welcome to come to Kullu. Also Vandana ji and Neeraj ji. So with that, we're moving on to the next poet. And we have with us Anant Alok. Anant Alok हिमाचल सरकार में अध्यापन करते हैं और बहुत सी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं और आई थिंक इंडिया के और भारत के सभी मुख्य पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां और कविताएं प्रकाशित हैं। आलोक जी आइए, आपकी कविताएं सुनने के लिए आतुर हैं। छंद मुक्त कविताओं से पहले दोहे आपके सामने रखूंगा। देखिए, अम्मा को लिख भेज दो, अम्मा को लिख भेज दो, थोड़ी दुआ सलाम, उसके तन मन को लगे ज्यों के सर बादाम, उसके तन मन को लगे ज्यों के सर बादाम। और अम्मा जल्दी उठ गई। बहुत शुक्रिया अजय भाई, नमस्कार। दूसरा दोहा देखें कि अम्मा जल्दी उठ गई, आंगन रही बुहार, बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार, बीन बीन कर रख लिया सब बच्चों का प्यार। और मोटे चावल में मिला, मोटे चावल में मिला दिया जरा सा नीर, माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर, माँ के हाथों से बनी बिना दूध की खीर। बहुत शुक्रिया मैम, नमस्कार। और सूरज खिड़की पर खड़ा, सूरज खिड़की पर खड़ा चमक रहा है भाल, अम्मा ने आवाज दी उठ जा मेरे लाल, अम्मा ने आवाज दी उठ जा मेरे लाल। और आप कुछ समकालीन दोहे देखें
कि पत्थर की शिवलिंग पर चढ़ा रहा है खीर। अम्मा भूखी मर गई बिस्तर दरिया तीर। अम्मा भूखी मर गई बिस्तर दरिया तीर। और पत्थर की मूरत बता पूछे भूखे लोग। पत्थर की मूरत बता पूछे भूखे लोग। कितने पत्थर खा गए हम भूखों का भोग। कितने पत्थर खा गए हम भूखों का भोग। और सच्चाई कड़वी लगे कहता ये ना चीज। सच्चाई कड़वी लगे कहता ये ना चीज। बच्चों को चुभने लगे रिश्तों के ताबीज। बच्चों को चुभने लगे रिश्तों के ताबीज। और ये दोहा देखें कि अंत समय में पुत्र के हाथों मिला न नीर। हलवा पूरी किस तरह खाऊं बिना शरीर। हलवा पूरी किस तरह खाऊं बिना शरीर। और खाली खोखे रह गए फोकट सारे व्यर्थ। अर्थ चुरा कर ले गया शब्दों के सब अर्थ। अर्थ चुरा कर ले गया शब्दों के सब अर्थ। और अंतिम दोहा कि कटे फटे कपड़े बने। कटे फटे कपड़े बने खानदान पहचान। आगे पीछे जींस में कितने रोशनदान। आगे पीछे जींस में कितने रोशनदान। शुक्रिया आप सभी का जो सुन रहे हैं। अब मेरी कविता जो अगली कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं कविता उसका शीर्षक है घास काटना। पहाड़ के कांधे चढ़ी औरतें कर रही हैं हजामत बूढ़े पहाड़ की। पहाड़ के कांधे चढ़ी औरतें कर रही हैं हजामत बूढ़े पहाड़ की। कनपटी और सिर के पिछले हिस्से में बचे खुचे पके भुरियाए बाल कतर देती हैं हर वर्ष जड़ा आने से पहले। ये औरतें भले ही प्रोफेशनल हजाम ना हो लेकिन इनके आगे बड़े बड़े हजाम भरते हैं पानी जब चलता है इनका दराती उस्तरा। इनमें से अधिकतर ने नहीं पढ़ा है गणित। इनमें से अधिकतर ने नहीं पढ़ा है गणित मगर इनके ज्यामितिक ज्ञान का कोई सानी नहीं। बिजली की फुर्ती से कतरती हैं ये अपने अपने हिस्से की आयतें वर्ग और त्रिभुजें। बिना स्केल पेंसिल और प्रकार के काटती हैं भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेंशियल। पहाड़ का सर हो जाता है एकदम फैशनेबल आकर्षक। फिल्मी सितारों आज के नौजवानों ने इन्हीं से सीखा होगा बालों में कटिंग के अलग अलग डिजाइन बनवाना। पहाड़ ने गर्दन से छाती तक ओढ़ा रखा है स्लेट पत्थर के श्याम श्वेत मकानों से बना चेकदार काफिया। गेहुई हरी टी शर्ट पहने पर्वत लगता है एकदम स्मार्ट हैंडसम ओल्ड यंग मैन। औरतों ने रख दी हैं अपने अपने हिस्से की आकृतियां अपने देसी फार्मूले से बदलकर बड़े बड़े शंकु और बेलन में। निरा मूर्ख था वह आदमी जिसने बनाया था मुहावरा घास काटना
घास काटना होता है, यानी आसान काम होता है। मेरी अगली जो कविता है उसका शीर्षक है लाठियां। दरवाजे की पीठ के पीछे कोने में दीवार से पीठ टिकाए खड़ी डरी सहमी हट्टी कट्टी लाठियां सूख रही थी इस चिंता में न जाने कब दवादा आ जाए और उन्हें जाना पड़े अघोषित युद्ध के मैदान में। एक दूजे के कान में बोली, बची हमारी भी जान, बची हड्डियां टूटने से, मांस छितने से, लहूलुहान होने से बचा रहा हमारा बदन, बची रही पसलियां चरमराने से, बच गई हम भी बेवजह की बदनामी से। अच्छा ही हुआ इतने सारे बंदे बंदियां बच्चे बूढ़े और जवान चढ़ गए वबा की भेंट आप ही। वबा माने बीमारी। अगली कविता है तुम्हारी सरिता। छोटी छोटी कविताएं हैं। सागर सुनो, तुम मेरे दोनों ओर बिछा दो कड़ा पहरा, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम तक पहुंच पाऊं सुरक्षित। मुझे इंसानों से डर लगने लगा है, तुम्हारी सरिता। अगली कविता का शीर्षक है पीठ लगाना। बचपन में जब मां के साथ जाता था घास पत्ती या फिर लकड़ी लेने, मां बांध कर देती थी अलग से मेरा छोटा सा भारा। मेरी नन्ही नन्ही बाहों में फंसाकर काछी, ज्यों माएं फंसाती हैं अपनी नन्ही मुन्नी की बाहों में उनके स्कूल बैग की तनियां। मां कहती थी, ले पीठ लगा, मैं चकवा देती हूं तेरा भारा। पीठ लगाने का मतलब सिर्फ किसी को हरा देना नहीं होता। बहुत शुक्रिया अजय भाई। और ये अंतिम कविता देखें जिसका शीर्षक है पिता। पिता कभी बरगद नहीं हो पाए, इस बात का कोई अफसोस भी नहीं उन्हें। पिता कभी बरगद नहीं हो पाए, इस बात का अफसोस भी नहीं उन्हें। इस तथाकथित कथित स्वर्णिम जंगल में पीपल होना भी कोई छोटी बात नहीं। जब चारों ओर उगे हों कीकर बबूल नागफनी सुरु खैर के कंटीले पेड़, जब चारों ओर हरदम कत्ल करने पर उतारू हों जीभ लपलपाती आरियां, जीभ लपलपाती कुल्हाड़ियां, दांत पीसती आरियां और बाहों में भरकर गर्दन पर चलने को तैयार खड़े हों दरात। कुछ तथाकथित बरगदों के पांव में मुश्किल से जी रहे हों लेंटाना, करौंदे, बैर, कैंथ, कशमल की कुछ झाड़ियां। ऐसे में खुद को लहूलुहान होने से बचाए रखना, पीपल बन खड़े रहना किसी उपलब्धि से कम नहीं। पीपल होना मात्र दरख्त होना नहीं, अदा करने होते हैं उसके सभी फर्ज भी। पीपल ने खुले दिल से दी सभी को प्राणवायु, छाया, फल फूल पत्र और समिधा, बिना कोई भेद किए। उस पर लटके रहे असंख्य मरकट लंगूर, गिलहरियां, सांप, बिच्छू, लोमड़ियां, नेवले, उड़ उड़ कर बैठते रहे कबूतर, तीतर, बटेर, चील, कौवे, गिद्ध, बाज, टिटहरी, किंगफिशर और उलूक भी। पीपल ने नहीं किया निराश किसी को भी, ना ही उतारा कभी अपने बदन से इन्हें इनकी मर्जी के खिलाफ। बीज पत्र से निकले नन्हे पांव जब सीख गए संतुलन, चलने लगे पिता की उंगली थामे बिना ही। जब उनके हाथों में आ गया कोर तोड़कर मुंह तक ले जाने का सलाओ, ठीक उस वक्त पीपल ने उखाड़ कर रोप दिया अपने से कुछ दूरी पर उन नन्हे पौधों को और देता रहा अपनी अदृश्य गर्भनाल से ऑक्सीजन लगातार, जब तक कि वे सीख ना लें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। बेशक
पिता चाहते भी नहीं थे बरगद होना, उन्हें मालूम है बरगद के नीचे कभी कोई पौधा पनप नहीं सकता। पीपल होना वास्तव में बुद्ध होना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई अनुवाद नहीं है, ना ही किसी ने किया और ना ही मैं कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Shukriya, Anantji. Thank you very much. I think through all the poetry of these three poets from Himachal Pradesh, the Himalayas themselves have spoken to us. And they've sung a song that was probably unheard of earlier at Kritya. Thank you very much, Anantji. And now we move on to the last poet of the evening, but she is obviously, I think, one of the most awaited poets. We have Elka Dimitrova, who lives and works in Sofia in Bulgaria. And as a career, she is basically an academic, and literary studies and literary criticism are her forte. She has special interest in modernism, and she's an associate professor of Bulgarian literature at the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences. Elka is the author of 3 books of poetry and a winner of a number of literary awards, among which the award of the French Academy of Poetry is one. Elka, we are very happy to have you here. Thank you for making time for us. And you're going to read your poems in Bulgarian. One poem from you, and then I read the translation. Thank you, Kamayani. Okay. Before reading my poems, I do want to say a huge thank you to the organizers of this splendid meeting. I know Rati Saxena, her poetry, from our festival Orpheus in Plovdiv, Bulgaria. And special thank you to Kamayani for the very caring and professional work during the organization of this meeting. And also thank you all poets gathered here for your words, as they were really strong, wise, and very different. So, I'll read my first poem now. Паметта на птиците. Не знам каква е паметта на птиците. Отдавна не съм се прераждала в птица. Но днес видях една необичайна, с източен клюн и пъстро оперение, кръжеше над блатата в парка, над патиците, гарваните, косовете, кръжеше режещо красива. Докато я следвах, погледът ми падна на земята. В краката ми лежеше оглозган труп на птица. С необичайно източен клюн и пъстро оперение. Не знам каква е паметта на птиците и колко дълго скитат в кръговете, оставени от друга птича душа. So, the English title of this poem is The Memory of the Birds. Birds. I don't know what the memory of the birds is like, as it's been quite a while since I was last reborn in a bird. Today, though, an unusual one grasped my eyes. A bird with a peculiarly long, thin beak and variegated plumage, circling over the park swamps, over the ducks and the crows and the blackbirds, circling in its rippling beauty. While following it, my eyes fell on the ground. There was a bird carcass at my feet, picked shiny clean, a carcass with a peculiarly long, thin beak and variegated plumage. I don't know what the memory of the birds is like, and how long they keep roaming in the circles left by another bird's soul. I don't know what the memory of the birds is like, and how long they keep roaming in the circles left by another bird's soul. Thank you. Elka? Воинска песен.
Кълни, земю, кълни, жива да прокълнеш. От коле не раждаш, няма да родиш. Ти с кръвта ни мъжка в суе се поиш. Плюем небето, рием земята, впиваме с коли в скалната сол. Сластново пием, мрем и се мърляме голи пред Бога си мърляв и гол. Ние сме твоите войници. Вървим и вървим и вървим. Изгариме пойните птици, гадаем по гладния дим, заравяме кухите ями на своите кълнящи очи, но вървим и мълчим, а Тебе те няма, Господи, няма ни вече и нас. Озверяхме от вяра и пости, от безверие и от страст. Плюем небето, рием земята, впиваме с коли в скалната сол, сластново бием, мрем и се мърляме голи пред Бога си. Мърляв и гол. Soldier's Song. Soldier's Song. Curse, you earth, curse. Sprout in your curses. No fruit have given, you won't give fruit. As our male blood, you soaked for no good. We spit against heaven, dig earth with our fingers. We sink our lips into the rock salt. We lustfully yell, die and get messy, naked before our God, messy, naked and odd. Lord, we are your soldiers. We walk and we walk and we walk. We burn the songbirds and then read the future into the twists of the smoke. We bury the hollows of our bleeding eyes, but we walk, utter no word, wait no rise. Yet, Lord, you're not here, and we're not here. We've turned into beasts with fasting and trust. We've turned into beasts with mistrust and lust. We spit against heaven, dig earth with our fingers, we sink our lips into the rock salt. We lustfully yell, die and get messy, naked before our God, messy, naked and odd. Thank you, Kamayani. And I will read my last poem in English as it does not have Bulgarian version. And the translations of my previous two poems were mine. So, words, words, words. We think we are lucky while our army is made just of words. Cause words might be real, but they are not actual, as they do not act. We think so until a strange moment comes, short as a wing, odd as a wind blow in the most windless twilight sea hour. Right after sunset, just before darkness, so-called opal hour, a strange moment comes when just a word turns into an action and we no more know how to speak. Thank you. That was from me. Wonderful, wonderful, Elka. Thank you so much. So with that, we come to the end of this very enriching session. On behalf of the Poetry Festival Director, Dr. Rati Saxena, I extend a very warm, heartfelt gratitude to all 8 of you. Thank you for making time for us. And I think a bigger word of gratitude is something that we owe to the audience. They've been with us for an hour and a half. And for most of us here in India, this is dinner time. And I'm sure all those who've made time for us have made time at the cost of many other things that they could have done. Let's hope that we meet in person someday, somewhere. And in the meantime, let's all continue to read and write poetry. Thank you, Kritya. Thank you all. Thank you, dear people, all the lovers of poetry. Bye-bye and good night. Thank you.